So hello everyone and welcome to Career Launcher. In today's class, we are going to discuss a very important topic, and that is Vijayanagar Empire. And this is important for all the exams, and especially we are having MHCT exam very soon. So for that also, because Vijayanagar Empire was primarily located in those regions of Karnataka, and which is near to Maharashtra. So we'll discuss that. Then we will discuss one kingdom which was in Maharashtra also called as Bahmani Kingdom. Little bit we will discuss that also, because it has some links with the Vijayanagar Empire. Okay, so we are beginning. I think I'm audible, visible. Is everything fine? Am I audible, visible? If yes, then please write yes in the comments so that we can begin with the class. Agar meri awaaz aa rahi hai, if I'm audible, visible, if everything is fine, please write yes in the comments so that we can begin with the session. And tomorrow we have decided to have a class on Delhi Sultanate, because there have been questions from there also. And if possible, next week we have कुछ history की classes कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि schedule कर दूँ. And of course, this class will be more question and answer based, but with the help of that you will learn. Okay? Yes. Okay, I think I'm audible, visible. Yes. Good evening, Kumari, Bhavna, Kushagra, Priyanshi. Good evening, all of you. I think the class is fine. So let us begin. Before that, just go to our live section, go to our YouTube channel live section. एक मैंने MHCT का revision class start किया, so this we are doing it on a Sunday at 8 p.m. You can watch it also, okay? Or you can go to our playlist and watch those classes. ठीक है ना? उसमें भी मिल जाएगा. So basically, in class 12 history book, there is a chapter, an imperial capital, Vijayanagar Empire. Okay? And actually, why I'm discussing it, because if you see the CLAT also in previous year question, they had asked questions directly from NCERT book. They had given passages. So this we can expect in MHCT also, that they can give you questions from NCERT books also. Okay? So let us begin with the first question. So the Vijayanagar Empire was established in the year 1336, 1456, 1526, 1721. What is the right answer to this question? So just I am telling you that if you are attentive in the class, you can answer the question, even this question, even without having prior knowledge. इतना मैंने आपको hint दे दिया. What is the right answer to this question? अगर आप क्लास में attentive होगे, तो आप इसका आंसर कर दोगे. अगर आपको knowledge नहीं होगी तो भी. Yes, Kushagra Saxena and Kumari Bhavna, you both right. 1336. कैसे? Yes, Nandini Chaudhary, you're right. अभी मैंने आपको दिखाया 14 to 17th century. 14th century कब से start? 1301 से start हो जाता है ना. 17th century मतलब 1699 1700 तक, right? It means 1300 something में होगा 14th century. इसमें 14th century सिर्फ यही है. ये 14th century है, ये 15th century है, 16th century है, 18th century है. So the right answer is A. And that is why when I gave you a question, I told you that if you were attentive in the class, you can answer it even without the prior knowledge. ठीक है? तो ये सब ध्यान रखिएगा. एग्जाम हॉल में attentiveness is very important. You have to be very careful in the examination hall, right? And attentive also. ठीक है? 2-3-4 क्वेश्चन तो इसी से गड़बड़ हो जाता है अगर आपका ध्यान इधर उधर गया तो. So you have to be very careful. A is the right answer. Okay? Yes. So it was founded by Harihara I and Bukka I in 1336 AD. Okay. So they belong to the Yadav clan and Vijayanagara Dynasty, etc. Now let us move on. So basically, इसको विजयनगर एम्पायर को कर्नाटका साम्राज्य भी कहते थे. I hope you are aware. This word is mentioned in NCERT book. कर्नाटका साम्राज्य. ठीक है? And that is why we have today Karnataka in that region, state of Karnataka. Okay. So basically, it was from 1336 to 1646. And if you see it carefully, ये South India का portion आप देखोगे. This region is today what we call it as the state of Karnataka. This region is today a state of Maharashtra, right? ये आज का महाराष्ट्र हिस्सा है, ये कर्नाटका है. Somewhere here गोवा मिलेगा आपको, है ना? This region is actually the state of Kerala. This region is the state of Tamil Nadu, and this region is the state of Andhra Pradesh. ठीक है? But I'm telling you because you will get an idea about it. ठीक है? और ये वाला हिस्सा जो है, this is actually modern day Telangana. Because you will get an idea. So majorly, actually, the modern day Karnataka was majorly the part of Vijayanagar Empire. Okay, and some other states also, but you should have a basic idea about it.
Now, the next question is, what was the capital of Vijayanagar Empire? Halebedu, Dwarasamudra, Hampi, Bidar. What is the right answer to this question? विजयनगर एम्पायर का कैपिटल क्या था? Yes, I am expecting everyone to answer. Yes, Nandini and Kushagra, you both right. Yes, Priyanshi Goel, Hampi एक अक्सर न्यूज में रहता है, ठीक है. And these two are same cities. पता है आपको? This was capital of which kingdom? Very famous kingdom. ये भी कर्नाटका में है, Halebedu और Dwarasamudra. This is also you will find it in Karnataka, and it was the capital of which kingdom? Halebedu या Dwarasamudra. Capital of Hoysala. Hoysala Empire, ठीक है. Recently, Vijayanagar copper plates were formed. Okay, Kushagra, very good. So if that is the case, then you should know more about it. Okay. ऐसे भी विजयनगर एम्पायर का न्यूज़ में था. Bidar, you will find it near almost 120-130 kilometers from Hyderabad. ठीक है. So C, Hampi is the right answer to this question. और अगर आप देखोगे, so Karnataka is there and Bangalore is ऊपर, यहाँ पे मिलेगा Hampi, है ना? And Bangalore is here. Here is Bangalore. ठीक है. That is what you should be knowing. Now the next is the city of Hampi is on which river? Very important. किसी भी एम्पायर जो किंगडम होता है उसमें रिवर का बहुत बड़ा रोल होता है. लाइक वी हैड डन डिस्कस्ड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस रिवर होती थी. दिल्ली में बहुत सारे कैपिटल्स रहा है. वन ऑफ द रीजन इज यमुना. ठीक है. सो यू विल सी इट, मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज आर एक्चुअली ऑन द बैंक ऑफ सम रिवर. ठीक है. सो कोई भी जो बड़े शहर होते हैं जनरली आप देखोगे वो किसी न किसी रिवर या समुद्र के किनारे होते हैं. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल. यस, कुमारी भावना, प्रियंशी गोयल, कुशाग्रा सक्सेना, यू आर राइट. The right answer is the option C, Tungabhadra, which is a tributary of which river? Tributary of, yes, Nandi, you are also right. Tungabhadra कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? Actually, it itself forms Tunga and Bhadra, merged to form Tungabhadra, and Tungabhadra then goes and meets which river? Which river? यहीं पे लिखा हुआ है कृष्णा रिवर. Yes, Kushagra, right. And what is the name of the doab between Krishna and Tungabhadra? ये सब पूछते हैं, मैंने देखा है. These are the things you should be knowing. Yes, Priyanshi and Kushagra, कृष्णा रिवर है. उस दोआब का नाम क्या है जो कृष्णा तुंगाभाद्रा के बीच में जो जगह है? So this is, let's say this is Tungabhadra river coming, this is Krishna river coming, and they both meets, तो ये बन जाती है कृष्णा रिवर. This is Krishna coming. ठीक है. This is Tungabhadra. Okay. और मान लो कि somewhere here is Hampi on it. ठीक है. Yes, रायचूर दोआब, very good. So ये वाला जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दोआब, why is दोआब so important? रायचूर दोआब, very good. Yes, कुमारी भावना, प्रियंशी, कुशाग्रा, you are right. दोआब is very important. Why? दोआब, आब मतलब होता है पर्शियन में या पंजाबी में, उर्दू में भी यूज द वर्ड वाटर. अदो मतलब टू. So basically it is the place between two water, right? The land between two rivers, and this is actually very fertile ground. So इसीलिए दोआब के लिए लड़ाई होती है अक्सर. So even for Raichur दोआब there have been tussle fight for that if you read in detail. ठीक है. तो अगर आप देखोगे, आप देखो यहाँ पर से, so this is the state of Karnataka today, है ना? यहाँ पे भीमा रिवर है, कृष्णा रिवर है, ये तुंगाभाद्रा जा रही है. So this is Tungabhadra going, this is Krishna coming, and it is forming later on Krishna बन जा रही है. तो ये वाला region है. The land between, this is Krishna and this is Tungabhadra. The land between that, these two are called as Raichur Doab. Okay, that is what you should be knowing about. ठीक है. यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ गोवा मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ भी देख सकते हो, this is Tungabhadra river, है ना? ये वाला देख लो. और this is actually Krishna river, और ये बाद में कृष्णा रिवर बन जाती है. This is Krishna river, और यहाँ पे दोआब. Okay, that is what you should know. यहाँ भी देख सकते हो कृष्णा रिवर is there, तुंगाभाद्रा, और ये जो रीजन है रायचूर दोआब कहते हैं. The land between Krishna and Tungabhadra river. और यहीं पर आपको कहीं पर ये तुंगाभाद्रा नहीं, इसी पर कहीं पे आपको हम्पी मिलेगा. ठीक है. So that is what you should know.
अच्छा एक चीज और है, मैंने वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास आल्सो, इस क्लास में मैंने आई थिंक बताया था, ये वाली क्लास में जो मैंने आई हैव स्टार्टेड है ना संडे को 8 PM पे वी हैव स्टार्टेड दिस एमएससीटी रिवीजन सीरीज, जिसमें मैंने आपको बताया था वी हैड डिस्कस्ड इट दैट अशोकास ओरिजिनल नेम वाज व्हाट, देवनम प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी और प्रियदासी, and this was actually found in Maski edict in Karnataka, so this name was written. This is also very near to Hampi actually. Yes, Kushagra Priyadasi या प्रियदर्शी नाम है, तो ये मास्की एडिक्ट में फाउंड किया गया था, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी नियर टू, दिस इज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट, रायचूर दोआबई, मास्की रिवर, वहां पे छोटी सी एक रिवर गुजरती है ना, ट्रिब्यूटरी है गंगाबाद की छोटी सी ट्रिब्यूटरी उसमें. सो दैट वाज फाउंड देवनम प्रियदर्शी एम्परर अशोका के जमाने में, लाइक एंड जेम्स प्रिंसेप सेड, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि इट वाज जेम्स प्रिंसेप हु फाउंड दैट देवनम प्रियदर्शी या देवनम प्रियदासी इज नथिंग बट एम्परर अशोका, राइट. तो जो मास्की एडिक्ट पाया गया वही वो रायचूर दोआब उसी रीजन में पाया गया, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. The next is which of the following is not associated with, is not, be careful whenever the word not comes in the question, you have to be careful, is not associated with Hampi. Virupaksha temple, Brihadeshwar temple, Mahanavami Tibba, Hazari temple. What is the right answer? ये सब अगर आपने एनसीईआरटी के बुक पढ़ा होगा क्लास 12 की, so all these terms are mentioned in that book, in that chapter of Vijayanagar Empire. उसमें mentioned है, ये चारों mentioned है. Can anyone tell me? बताइए. Yes, कुमारी भावना, right. Brihadeshwar temple is in Thanjavur. Thanjavur, जिसको आज टू डेट इज कॉल्ड एज तंजौर. कहां मिलेगा ये? इट इज इन तमिलनाडु, बृहदेश्वर टेंपल. बाकी विरूपाक्षा टेंपल, महानवमी दिब्बा, हजारा रामा टेंपल, एक और है विथाला टेंपल, दिस ऑल आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद हम्पी. यस, कुशाग्रा नंदिनी वाला, राइट, बी इज द राइट आंसर. तो मैं आपको दिखाता हूं. सो लॉर्ड शिवा एंड हिज कंसॉर्ट पापा देवी, देखो इनके बारे में, ये एनसीईआरटी की बुक से है ना. So much of the initial formation was given the memories of the priest Virupaksha temple at the shrine Pampa Devi. ठीक है, Virupaksha temple हो गया, ठीक है, it is mentioned. Mahanavami Dibba is also somewhat associated, audience hall हुआ करता था, है ना. This is associated with Vijayanagar Empire, है ना. Then of course अगर आप ये देखोगे Hazara Rama temple, this was actually used only by the kings and his family, ये common people के लिए नहीं था Hazara Rama temple, ठीक है ना. ये इसकी इमेजेस है. एंड देयर वाज वन मोर कॉल्ड एज बृहदेश्वर टेंपल, ये भी मेंशन दिस चैप्टर में, एंड इट वाज टॉकिंग अबाउट तंजावुर, ठीक है. ये बहुत फेमस टेंपल है in actually Tamil Nadu. So that is what you should know. B is the right answer to this question. ठीक है. The next is which of the following famous is temple is famous for chariot. This is actually also mentioned in NCERT book. ठीक है, तो मैं NCERT से उठा के क्वेश्चन दे रहा हूँ, because if you attempt CUET या MHCT examination, क्वेश्चन वहीं से आता है ना. विरूपाक्षा टेंपल, विथाला टेंपल, महानवमी दिब्बा, हजारा टेंपल. अथवा I'll give you I'll discuss one CUT previous year question also, and you will realize you can do it with the help of these subject topics. चैरियट कहाँ मिलेगा आपको? चैरियट की इमेज, यस, कुमारी भावना, कोशाग्रा सक्सेना, यू आर राइट. बी इज द राइट आंसर, विथाला टेंपल में, ठीक है. तो आप देख सकते हो राइट साइड में विथाला टेंपल. अब देखो इसका चैरियट बना हुआ है ना, ये वाला जो इमेज है. सो दिस इज, यू विल फाइंड इट इन विथाला टेंपल. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ये है सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड प्लीज आंसर मी. द टेंपल नॉट बिल्ट बाय कृष्णदेवराया इज, एक्चुअली एडी ठीक नहीं लिखा है, it was from 1509 to 1529 AD. Vijay Mahal, Hazara Rama temple, Sun temple, Vithala Swami temple. I hope you are aware, we have discussed a lot of times that Vijayanagar Krishnadevaraya was one of the most prominent ruler of, the most powerful ruler of Vijayanagar Empire. Not built by Krishnadevaraya. विजय महल एक लोटस महल करके भी है, ये भी विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड है.
Yes, option C, Priyanshi Goel, Kushagra, you both right. Sun temple, तो कोणार्क सन टेम्पल आपने नाम सुना होगा. It's a very famous temple. कोणार्क सन टेम्पल in ओडिशा है ना. ठीक है, so C is the right answer. देखो कृष्णदेवराय ने विजय महल बनाया था, हाउस ऑफ विक्ट्री, हजारारामा टेम्पल बनवाया था, विठाल स्वामी टेम्पल बनवाया था. ठीक है, that is what you should know. And Konark Sun Temple is actually dedicated to Konark. I mean, it is in Konark, in Puri, in Odisha district. I'm sure you must have heard about that. है ना, ये आपने सुना होगा, पुरी में बहुत फेमस है ना. Built by Narasingha Deva, one of Eastern Ganga, in 1250 AD. That is what you should be knowing. Now, the next is the concept of Gopuram and Kalyan Mandap was started by whom? Harihara, Krishnadevaraya, Bukka Raya I, Rama Raya. गोपुरम और कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट कौन से विजयनगर एम्पायर के द्वारा लाया गया? या कभी कभी एक बार एग्जाम में पूछा था कल्याण मंडप इज एसोसिएटेड विद व्हिच एम्पायर, एंड दे गिव ऑप्शंस दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, बहमानी एम्पायर, लाइक दिस, चोला एम्पायर और लाइक दैट. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट दीस टू टर्म्स केम फ्रॉम विजयनगर एम्पायर, है ना. एंड व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? अच्छा, ये होता क्या है गोपुरम और कल्याण मंडप, कोई बता सकता है? देखो कल्याण मंडप मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाई भी था. ये राइट साइड, ये सब एनसीईआरटी के बुक से ये फोटो, ये वाला विथाला टेम्पल है राइट साइड, ये वाला कल्याण मंडप लेफ्ट साइड. तो क्या लिखा ना, कल्याण मंडप, मंडप जहाँ पे शादी होती है ना, सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग. सो दिस इज द प्लेस, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज कल्याण मंडप, वेयर एक्चुअली मैरिज सेरेमनीज यूज्ड टू टेक प्लेस. एंड दिस कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज वन कॉन्सेप्ट. यस, गोपुरम आर गेटवेज. यस, कुमारी भावना, इन यू आर राइट. कुशाग्रा, मैरिजेस रिलेटेड. यस, वेरी गुड. और गोपुरम जो होता है, इसको कहते हैं गोपुरम. इफ यू सी इट केयरफुली, देखो मैं दिखाता हूँ. अगर आपने साउथ इंडियन टेम्पल्स देखा होगा, मैंने लास्ट क्लास में, इस क्लास में मैंने बताया था, आई हैड डिस्कस्ड इन दिस क्लास दैट देयर आर 3 डिजाइन्स ऑफ टेम्पल: नागारा स्टाइल, वेसारा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल. सो द्रविडियन स्टाइल इज इन साउथ इंडिया. ठीक है, सो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल डिजाइनिंग, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, सो द्रविडियन स्टाइल में जो मेन ये होता है शिखरी विमान, द मेन प्लेस वेयर गर्भगृह इज देयर, और यहाँ पे गेट को गोपुरम कहते हैं. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, यू विल फाइंड इट इन साउथ इंडिया, these types of gopurams, gateways. So these were built actually started by none other than Krishnadevaraya. I have told you, अगर विजयनगर का क्वेश्चन आया, अगर if you do not know it, most likely this guy will be the answer. 1509 to 1529, because he was the most prominent ruler of Vijayanagar Empire. ठीक है, दोनों कल्याण मंडप, गोपुरम, इसीलिए इनके नाम पर राया गोपुरम भी कहा जाने लगा था. राया इनके नाम पर, राया गोपुरम्स. ठीक है, और गोपुरम तो आपने ये भी देखा होगा इस तरह का, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, है ना. हाँ, सो लेट मी शो, एंड दीस आर लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. ऑल बनवाया था, गोपुरम्स बनवाया था कृष्णदेवराय ने, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एंड यस, ये विथाला टेम्पल की इमेज है ना. सो दैट इज व्हाट. अब देखो इसमें क्या लिखा, गौर से देखो. Another shrine, Vithala temple, is also interesting. Here is the principal deity of Vithala, a form of Vishnu generally worshipped in Maharashtra. Okay, again this is important from MHCT point of view. Okay, that is what you should know. एक तो Virupaksha temple हो गया. So Lord Virupaksha, like very much respected, venerated in Karnataka, and this is Vithala, a form of Vishnu generally worshipped in the state of Maharashtra. ठीक है, ये पता होना चाहिए. Okay, yes. देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, these all are from NCERT book. ये NCERT book से ही है ना. कृष्णदेवराय placed on the gopuram of the temple चिदम्बरम temple. ये चिदम्बरम temple है तमिलनाडु में, है ना. And this is said by Domingo Pace. Domingo Pace एक traveler था from Portugal. He came and he wrote about these things. ठीक है, so ये सब बताओ जी. These all are actually from NCERT book, है ना. तो उन्होंने define भी किया कृष्णदेवराय को कैसे दिखते थे, है ना. That is what he had defined. ओके, है ना. गोपुरम्स, अब आप देखो यहाँ पे गौर से देखोगे, इस इमेज में देखो, आई थिंक ये वाला गोपुरम है. दिस वन इज द गोपुरम. विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी है ना, ये मेन ये हो गया टेम्पल का पोर्शन, एंड दिस इज गोपुरम. ठीक है, दिस वन, द लेफ्ट वन, लेट मी राइट इट, ये वाला गोपुरम, है ना. सो राया गोपुरम्स भी कहा जाने लगा उसको. ठीक है, मंडप्स, पैविलियंस, विरूपाक्षा. ये तो मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल है, विरूपाक्षा एंड विथाला टेम्पल एट हम्पी. ठीक है, दीस टू आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन. अब देखोगे, these are UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी. इसी में आ जाएगा विथाला टेम्पल,
Virupaksha temple, है ना? Then Hazara Ramaswamy temple, है ना? So these are the famous temples that we have discussed. Now the next one is Krishnadevaraya, which was the most powerful ruler of Vijayanagar Empire. Belonged to which king dynasty? Because in Vijayanagar Empire there were multiple, I think 3-4 dynasties were there. आपको ये बताना इसमें से कौन सा डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे? And I have one more question. Who was the ruler in North India when during Krishnadevaraya time? Yes, the right answer is Tuluva dynasty. Yes, C is the right answer. Priyanshi, Kushagra, Kumari, you all are right. C is the right answer, not A. Okay. And Harihara and Bukka Raya were the founders, 1336. They belong to which dynasty? Sangam dynasty, Saluva dynasty, Tuluva, or Abidu? Yes. इससे पहले का आंसर यस, बाबर वाज द राइट आंसर. यस, कुशाग्रा, प्रियांशी राइट. हाँ, तो मैंने आपको जो बताया इसका जो आंसर है हरिहर, इसका संगम डायनेस्टी आंसर. ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ, जस्ट वेट. तो Krishnadevaraya, he was from 1509 to 1529. तो 1526 first battle of Panipat happens. Battle of Panipat 1 and Babur defeats, ये सब पूछा था एग्जाम में, एमएचएट ने पूछा हुआ है, defeats Ibrahim Lodi, right, and becomes established Mughal Empire in 1526. ठीक है, so in fact Babur has mentioned about Krishnadevaraya also because he was the most powerful ruler in South India at that time. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, ये है 4 फेमस डायनेस्टीज विजयनगर एम्पायर. ठीक है, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ. तो पहला है संगम डायनेस्टी, है ना, 1336 में एस्टैब्लिश हुआ विजयनगर का फर्स्ट. हरिहरा एंड बुक्का दे एस्टैब्लिश्ड इट. ठीक है, फिर और भी हरिहरा टू, विरूपाक्षा, बुक्का राया, देवाराय, ये सब नाम है. ठीक है ना. फिर सलुवा डायनेस्टी के तो सलुवा, देखो जनरली सलुवा नाम से सलुवा फर्स्ट वाले का नाम होता है. नरसिम्हा देवराया, तिम्मा भूपाला, नरसिम्हा नायडू, ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड वन तुलुवा डायनेस्टी. सो तुलुवा डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे, इनका नाम है तुलुवा नारसा नायक. ठीक है, इनके 3 बेटा थे, ऑल दीस 3 वर द सन्स. सो पहले पहला बेटा बना वीरा नरसिम्हा राय, फिर कृष्णदेवराय एंड अच्युत देवराय. इज इट क्लियर? सो दिस वाज द फादर, then इनके बेटा बने, these all 3 were his sons. So one after the other brother became the king, है ना. So that is what you should know. कहीं कहीं पे फाउंडर में वीरा नरसिम्हा नायक का नाम लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ द हिज फादर, वो भी चलेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ये बने, फिर उनके भाई बने, फिर उनके एक और भाई बने. एंड द मोस्ट पावरफुल वाज द सेकंड ब्रदर. ये वाले सबसे बड़े पावरफुल बने कृष्णदेवराय. ठीक है, तो ये 6 साल के लिए, 20 साल के लिए, ये 13 साल के लिए, बट दिस वाज द मोस्ट पावरफुल वन. ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. फिर है अराविडू डायनेस्टी. अराविडू डायनेस्टी में रामा राया थे और उसके बाद बाकी सारे किंग्स थे, बट यहां से एम्पायर वीक होना शुरू हो गया. ठीक है, एम्पायर स्टार्टेड गेटिंग वीक फ्रॉम हियर, रामा राया की वजह से. नाउ व्हाट इज द रीजन, आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, थोड़ा सा आगे आइएगा तो आप समझ में आ जाए क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एम्पायर वीक हो गया. फाइनली इट एंडेड, बट यहीं से वीक होना शुरू हो गया. द एम्पायर स्टार्टेड. So let us begin. Let us move on, and I will explain why the empire started getting weak. Amukta Malyada was written by whom? Krishnadevaraya, Harshavardhan, Tenali Rama, Bukka Raya II. What is the right answer? We had discussed already on Monday, on Sunday class, 8 p.m. wale pe. Hai na? I had discussed that he was a very effective king as well as interested in literature also. Yes, A is the right answer. Yes, Priyanshi and Kushagra, you both are right. In fact, NCERT book में mention है, Krishnadevaraya, most famous ruler, composed a book in Telugu called as Amukta Malyada. ठीक है, और इनकी बुक अमुक्ता मल्यादा है, मदालसा चरित्र है, सतवादो परिणय है, रासा मंजारी है, जंबावती कल्याण, ये सब उनकी बुक है. बट ये सबसे फेमस है बिकॉज इट इज रिटन इन एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एंड इट इज रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज. तो जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, that is why you should be knowing about it. Okay, class 12 NCERT book, history book. Now the next is, which of the following ruler is known as destroyer of the Turks? Krishnadevaraya, Harshavardhan, Tenali Rama, Bukka Raya II. And why? I'm waiting for the response. Again, the answer is same, Krishnadevaraya. ठीक है,
Yes, Kumari Bhavna, right? Because he defeated dash. चलो ये भी आएगा. No, I'm not giving the answer. He defeated someone, some kingdom which was originally led by Turks. Yes, Ayan, that is helpful for JMI also. That committee information, right? Voyages against Deccan Sultans. Yes, Kushagra, Deccan Sultans plus Bahmani Kingdom. We will discuss it in the last portion of the class. ठीक है, इसलिए इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ द टॉक्स भी कहते हैं. इनका डिफरेंट नेम्स है कृष्णदेवराय का, है ना. आंध्र भोज, कर्नाटका रत्न, सिंहासनाधीश्वर, देख लेना ये नाम. यावना राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य, ये सबसे फेमस है आंध्र भोज. ठीक है. कन्नड़ राजा रामा राणा, तो दीज आर द फेमस किंग, है ना. Lord of Three Kings, Protector of Brahmins and Cause. These are the names you should be knowing. So he had defeated Bijapur, Golconda, Bahmani Sultanate. हाँ, खास के बीजापुर और bahmani Sultanate को हराया था. Even Gajapati rulers of Odisha, and that is why he is famously called as destroyer of Turks. Because here the Bahmani kings थे, they were Turks originally, and that is why you should be knowing about. Now the next is the next question. And please read this and answer me. इस पर और भी questions आए हुए different exams में. Eight renowned Telugu poets and scholars in the court of Krishnadevaraya, known for their significant contribution to Telugu literatures, and their names translate to 8 elephants of the direction. हाँ, बताओ. Please tell me, guys. देखो, if you are aware of it, अष्ट का मतलब 8 होता है ना. तो अष्ट तो 3 ऑप्शन में मेंशन है. Yes, Priyanshi Goyal and Kushagra Saxena, you both are right. अष्ट दिग्गज कहते थे, 8 मिनिस्टर्स. जैसे अकबर के जमाने में नवरत्न होते थे ना. Have you heard नवरत्न? 9 jewels. उसमें से एक बीरबल होते थे, टोडरमल एक्सेट्रा. Something similar to that. अष्ट दिग्गज. तो ये कोटियस होते थे, scholars, 8 scholars. Yes, Nandri, you are also right. अष्ट प्रधान किसको कहते हैं? अष्ट अध्याय क्या है? Please tell me these two also. हाँ, Tenali Rama was one of them. Yes, Priyanshi Goyal. Out of these 8 अष्ट दिग्गज, Tenali Rama was the most prominent one. ठीक है. What is अष्ट प्रधान and what is अष्ट अध्याय? Yes, Ashpradhan was in Maratha administration. 8 ministers in Maratha administration. And Asht Adhyay was actually a book by Panini. Panini's Sanskrit grammar. Yes, so Ashtadiggaj were 8 renowned Telugu poets during the time of Krishnadevaraya. And these are the 8 prominent poets. Ashtadiggaj. Or last one, Tenali Rama was the most famous one. Yes, Sanskrit text is Ashtadhyay, right? Kumari Bhavan. Then Ashtapradhan and 8 ministers during the Maratha Confederacy. इसमें सबसे फेमस होते थे पेशवा, है ना, the prime minister. This was very famous. पेशवा आपने नाम सुना होगा. I'm sure you must have read if you have read little bit about Maratha Empire. And those who are attempting MHCT, please read about Maratha Empire. Please read about Anglo-Maratha conflict or Anglo-Maratha war. I think there were 3-4 wars that happened. ये भी आपको बताना चाहिए. And Ashtadhyay is actually Panini's Sanskrit grammar. And Panini was a very famous person, Sanskrit scholar. And he wrote a book of 8 chapters called as Ashtadhyay. Okay, that is what you should be knowing. है ना. Let's move on. हाँ, ये तो मैंने बता दिया कि ये फादर थे तुलुवा डायनेस्टी के, इनके तीनों बेटा थे. This we have discussed. Krishnadevaraya was the most powerful one. Who among the following was the prime minister of Krishnadevaraya? Prime minister का नाम बता दीजिए. Tenali Rama, Timarosu, Nandini, Thimana, Pingali, Surana. What is the right answer? Yes, Sugar, right. हाँ, B is the right answer. A नहीं होगा. A में अष्टदिग्गज के एक पार्ट नहीं है तेनाली रामा. Timarosu is the right answer. ठीक है, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम तिमारोसु था, अप्पा जी, बट तिमारोसु is the famous one.
Yes, Kushagra, Nandri, Kumari, Brianshi, all right. The next is, which are the following? Yes, this is very, very, very important. Is per PYQ आया है मैथ सेट पे, and that is why I'm asking it. Which of the following is considered as huge blow to Vijayanagar Empire? मैंने आपको बताया था, एक king के बाद there was one king of Aravido dynasty. After his from his tenure, we have discussed that Vijayanagar Empire started getting weak. है ना? So after that battle, वो कौन सा battle आपको बताना है? Battle of Khanwa, Battle of Rakshasa, Tangadi, Battle of Raichur, Battle of Chaul. Kumari Bhavna is saying B, but why are you putting question mark? Yes, Kushagra is also saying B. It is actually Battle of Rakshasa, Tangadi. It is Battle of Talikota. यही same चीज है. Yes, Kushagra, Priyanshi Goyal, you are right. B is the right answer. Battle of Talikota कहते हैं या Battle of Rakshas Tangadi. पता नहीं कैसे pronounce करते हैं. I think Rakshasa पढ़ते हैं. So B is the right answer. And this Battle of Talikota, both are same thing. Happened in which year? Please tell me. Because from here, actually, there is a MHCT previous year question also linked with this. 1565, 1621, 1556, 1761. Yes, Kushagra, Priyanshi Goyal, you both are right. A is the right answer. And a Battle of Rakshas Tangadi, and also known as Battle of Talikota. तो विजयनगर एम्पायर वर्सेस डेक्कन सुल्तानत हुआ. यहाँ पर विजयनगर एम्पायर बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया, वीक हो गया. सो ये मैं आपको दिखाता हूँ. देखो मैंने आपको बताया था ना, आई डिस्कस्ड कि यहाँ से रामाराया अराविदो डायनेस्टी के थे, देखो 1565 है ना. आई हैव टोल्ड यू दैट फ्रॉम हियर द एम्पायर स्टार्टेड गेटिंग वीक. मैंने बताया भी था आफ्टर 15-20 मिनट्स बैक. सो इन्हीं के जमाने में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ एंड ही वाज एक्चुअली बैडली डिफीटेड, बट स्टिल इट वाज द एम्पायर डिड नॉट एंड सडनली. अगले 100 साल तक चलते रहा. फॉर द नेक्स्ट 100 years द एम्पायर वाज देयर, बट इट वाज एक्चुअली गॉट वेरी मच वीकेंड. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. Now let me discuss the previous year question. This is the MSCT previous year question and you have to arrange it in chronological order. किसी के हाथ पे लिखा हुआ है, this is handwritten, but this is the previous year question. ठीक है, please tell me. बताइए. अच्छा, आप ईयर बताते जाओ. सो प्लीज टेल मी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? आप ऐसे बताते जाओ. बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन इट हैपेंड? 1757 AD, 100 year before 1857 revolt. So it was between Robert Clive, British है ना, versus नवाब सिराजुद्दौला, आपने सुना होगा, और नवाब ऑफ बंगाल. बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 during the time of अकबर versus महाराणा प्रताप. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अभी मैंने बताया 1526 AD. मैंने बताया था ये बोल करके कि दिस इज इंपॉर्टेंट. बैटल ऑफ पानीपत 1, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी. बाबर वन एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर. बैटल ऑफ बक्सर 1764 AD है ना, अगेन ब्रिटिश वर्सेस, यहाँ पर था मोहम्मद बिन कासिम, शाह आलम, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 अभी मैंने बताया. सो विजयनगर एम्पायर वर्सेस actually Deccan Sultans, Deccan Sultanate है ना. That is what you should be knowing about. तो आप इसको सजा दो chronological order. सबसे पहले क्या होगा? So सबसे पहले वाला हुआ बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सो बैटल ऑफ पानीपत 1 सबसे पहले हुआ. उसके बाद क्या होगा? 1526 के बाद 1565 है ना. सो बैटल ऑफ तालिकोटा, बैटल ऑफ तालिकोटा हो गया. उसके बाद सजा दो. उसके बाद आएगा बैटल ऑफ हल्दीघाटी है ना, तो हल्दीघाटी. उसके बाद आएगा प्लासी. उसके बाद आएगा बक्सर है ना, ऐसे. ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू. प्रियंशी, आपने बस एक मिस्टेक किया है, तालिकोटा को पहले लिख दिया पानीपत से है ना. तालिकोटा 1565 में हुआ था. ठीक है, और अब मैंने आपको बताया भी था कि बैटल ऑफ पानीपत 1 जो हुआ था, बाबर केम टू पावर. उस टाइम पे कृष्णदेवराया थे, और कृष्णदेवराय के काफी बाद तालिकोटा हुआ. ठीक है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ है ना. कृष्णदेवराया, बैटल ऑफ पानीपत 1 इसी जमाने में नॉर्थ इंडिया में हो रहा था ड्यूरिंग बाबर टाइम, और यहाँ पर हुआ है तालिकोटा. ठीक है, इज इट क्लियर? सो फर्स्ट इट विल बी पानीपत 1, देन तालिकोटा. आई होप इट इज क्लियर. इवन बैटल ऑफ पानीपत 2 जो हुआ है
अकबर के जमाने, वो भी 1556 में, वो भी तालिकोटा से पहले हुआ था. The third one happened in 1761. ठीक है, I hope it is clear. Okay, the next is, who was the ruler of Vijayanagara Empire when Battle of Talikota happened? 1565 में जब हुआ, तो कौन थे विजयनगर एम्पायर के रूलर? अभी मैंने बताया कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा किसी भी हाल में. I have just told you 1509 से 1529. तो और मैंने अभी थोड़ा देर यस अभी मैंने बताया कि रामाराय इन्हीं के जमाने से वीक होना शुरू हो गया. Aravidu dynasty की. Yes, Priyanshi Kushagara, you are right. B is the right answer to this question. ठीक है, so B is the right answer. ठीक है, रामाराय. और इधर थे अहमदनगर, बीजा कमांडर्स और विजयनगर कमांडर. So that is what you should know. Battle of Rakshasi Tangadi या Battle of Talikota. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखोगे. I'll show you, है ना. यहाँ पर हम्पी है, और मैंने मैप पे देखा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहीं पे तालिकोटा मिलेगा, कर्नाटका में, है ना. वेरी नियर टू महाराष्ट्र से थोड़ा नजदीक पड़ेगा. That is what you should know, है ना. यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया. Now let's talk something about Bahmani kingdom that was in modern day Maharashtra region. So those who are attempting MH set, they should actually read something about Bahmani. मैं थोड़ा सा बता दूंगा. अब देखो यही ना महाराष्ट्र रीजन है ना. बिदर्ग, गुलबर्ग, है ना. These are the things you should know. 1347 से 1527 तक था, है ना. So it was established by Zafar Khan, but इनका जो ओरिजिनल नेम था, जो he took the name Alauddin Bahman Shah. ठीक है, Alauddin Bahman Shah, the first ruler, his original name was Zafar Khan. ठीक है, and they all were Turks in race. इसीलिए जब कृष्णदेवराय ने हराया था, when Krishnadevaraya from here he had defeated Bahmani Sultan, he was called as destroyer of Turks. ठीक है, इसीलिए क्योंकि बहमानी सुल्तान को हराया था. Just have an idea, rough idea होना चाहिए, है ना. This was the Muslim empire in South India, frequently clashes with Vijayanagar Empire, है ना. And 1509 Krishnadevaraya forces clash with Bahmani led by Sultan Mahmud, है ना. Sultan Mahmud और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर को हरा दिया था. That is why it's called as destroyer of Turks and all, है ना. This you should be knowing. इसी में कृष्णदेवराय ने रायचूर दो आपको स्नैच किया था फ्रॉम बहमानी किंगडम. रायचूर दो आप समझ गए, the place, the land between Krishna and Tungabhadra, we have discussed in the beginning of the class. ठीक है ना. तो ये हो गया आपको यहाँ. हाँ देखो यहाँ पे हम्पी है, जो which was the headquarter of or capital of विजयनगर, और यही हो गया बीजापुर, है ना. बीजापुर जिसको हराया था. So two people, बीजापुर को हराया था और बहमानी सुल्तान को हराया था ना. तो बीजापुर यहीं पे, विजयपुरा को बीजापुर कहते हैं. ठीक है, ठीक है. तो मतलब रफली समझ लो कि यहाँ पर बहमानी थे और यहीं पर रफली बीजापुर कर पाया था. So these two were actually once defeated by Krishnadevaraya. Later on, जब कृष्णदेवराय खत्म हो गए, later on when Ramaraya actually came, he was actually defeated by these sultans. ठीक है, तो ये सब होता रहता, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, ये उनको हरा रहे, उनको हरा रहे. these are the things that happen. एक और चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर गोवा था. गोवा was also controlled by बीजापुर रूलर. इसको पोर्चुगीज ने हरा दिया था. पोर्चुगीज केम एंड एस्टैब्लिश्ड गोवा in 1510. इसीलिए when you get a chance to visit Goa, you will see a lot of Portuguese church even today in Goa. उसका रीजन यही है. ठीक है, सो इसमें भी कृष्णदेवराय ने हेल्प किया था पोर्चुगीज को गोवा कैप्चर करने में फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर. ठीक है, तो ये बीजापुर यहाँ होगा, तो बीजापुर के सुल्तान थे, इनके कंट्रोल में था गोवा. बट इन 1510 and Krishnadevaraya was from 1509 to 1529. So Krishnadevaraya helped actually Portuguese capture Goa. और ऐसा कहा जाता है कि Portuguese helped him back by giving guns or etc. So Portuguese ने guns वगैरह भी दिया था कृष्णदेवराय को. This is what they say. Provided with horses etc. and all. That is what you should be knowing. है ना. Which permitted him to construct forts. भटकल एक जगह है, वहां पर forts वगैरह भी कृष्णदेवराय ने बनवाया था. Signed a treaty with them to construct forts in Bhatka to exchange in Goa and all. ठीक है, that is what you should know. एक दो चीजें एनसीईआरटी की बुक में लिखा, फेमस ट्रैवलर्स दैट केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर. ठीक है, तो एक है निकोला कॉन्टी, नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टी करके इटालियन होते हैं. अब्दुल रज़ाक पर्शियन ओरिजिन के थे. अब्दुल रज़ाक समरकंदी नाम है. सो समवेयर इट इज रिटन कि हेरात अफगानिस्तान के थे, हालांकि समरकंद इज प्लेस इन उज़्बेकिस्तान. ठीक है, बट इट इज सेड कि अफगानिस्तान वगैरह रीजन से आते. डोमिंगो पीस पोर्चुगल से थे. पीस से पीस याद रखना. फर्नाओ नोनेस ये भी पोर्चुगल के थे. These all are mentioned in एनसीईआरटी बुक. ये सब का नाम मेंशन्ड है. ठीक है, दुआर्ट बारबोरोसा ये भी पोर्चुगल से आए थे, और अफानासा निकेतिन रशिया से आए थे.
All these names are mentioned in Russia in NCERT book. ये आपको पता होना चाहिए. These are the famous travelers who came during this time, during the time of Vijayanagar Empire. Yes, Kushagra, very good. Abdurrazak came during the reign of Devara. ठीक है. So ये आप देख लेना है ना. अफगानिस्तान वगैरह रीजन से आए थे, बाकी पोर्चुगल से लोग आए थे यहाँ, और इटली से मैंने आपको बताया यहाँ थे. तो समुद्र से आते थे. Of course they used to come. I'm just giving an idea. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. So those who are attempting CUET, जो लोग CUET attempt कर रहे हैं, we are having a channel of CUET also. So अगर किसी को CUET के लिए चाहिए तो आप YouTube पे जाके सर्च करना career launcher CUET. We are having a channel for that. So 7 PM पे today we'll be having a class on science and technology. If you are interested, you can come. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.